अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़ब अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी ऑस्ट्रिया 15 फ्यूचरिस्टिक एरियल ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं नितिन गडकरी की वीडियो। भाई मेरे को ऑस्ट्रिया में गए हैं, वहाँ पे कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे इंडिया के लिए। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हाल ही में दोस्तों नितिन गडकरी जी ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। भारत के इतिहास का ये सबसे ज्यादा ऐतिहासिक दौरा इसलिए होने वाला है बिकॉज $15 बिलियन वर्थ के रोपवे प्रोजेक्ट हमारे देश में बनने वाले हैं। 250 प्रोजेक्ट्स है ये टोटल, जिसकी कुल लंबाई ही 1200 किलोमीटर की है। जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम एक साथ मिला दें तो मुंबई से लेके दिल्ली तक पूरा रोपवे डाला जा सकता है। एंड यही सब प्रोजेक्ट्स 10 साल 15 साल नहीं बल्कि 5 साल में ही पूरे हो जाएंगे। सो आइए देखते हैं गडकरी जी की ये ऐतिहासिक जर्नी और सुनते हैं गडकरी जी ने क्या बोला। The program plans to develop close to 260 projects, which already I have received. 260 projects at the cost of $15 billion of 1,200 plus kilometer over a period of 5 years, making it the largest ropeway development program in the world. And that is to be a great potential for all of you to take interest in the development of ropeway, cable car, funicular rail in India. Highlight of this program include one of the most challenging projects like ropeway projects in Hemkund Sahib Ji, that is Badrinath, Kedarnath and Gangotri, Yamunotri, which are the very important religious places in India. I invite you all to the Indian Ropeway Expo. We are the fastest growing economy in the world. And regarding infrastructure development in India, we are now second largest network of national highway in India. We have already 6 world record. We are making big tunnels, big access control express highways, and there is a huge potential and economic viability equally already there. The most important thing in our program that we are connecting the tourist spots which are very important. Now, as far as Indian situation is concerned, we want to increase more tourism domestically and internationally, and we have got the potential. Now road network already is going on. At the same time, we need to develop ropeway, cable car and funicular system. As nearly 30% of the land area in India consists of hilly and forest terrain, where development of conventional modes of transportation such as rail, road and air possesses a technical challenge. Also in many of these areas, availability of land for developing infrastructure is a serious concern. Therefore, last mile connectivity remains a key challenge in such areas. At the same time, we have big cities like Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore. Bangalore is supposed to be the world IT capital now, and where we have a problem of traffic jams and at the same time pollution. We are the country who has the highest import of the fossil fuel. So now this is the problem and a big challenge which I want to put up with you, that how it can be possible for mass rapid transport on electricity where we can use in the big city. That is also a big economic potential is there, and we need that some good solution from the people like you. I always believe that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. The most important thing in India is, as far as automobile industry is concerned, in the world our number was 4, but just we passed Japan, and now our number is number 3rd now. And in due course of 5 years, as a transport minister, I am in charge for that. I am confident that we want to make it number 1, and we are working on that. So there are a lot of good ancillary industries where it can be useful for manufacturing of different components which you need. To realize the potential and ensure that development reaches one and all, our Prime Minister and Finance Minister declared a big program, National Ropeway Development. In our language, Parvatwala means mountains. So was announced by the Government of India in Union Budget in 2022-23, and it will improve connectivity and convenience for commuters in hilly regions and decongest urban areas where the conventional mode of transport is saturated.
The program plans to develop close to 260 projects, which already I have received, 260 projects, at the cost of $15 billion, of 1,200 plus kilometers over a period of 5 years, making it the largest ropeway development program in the world. And that is to be a great potential for all of you to take interest in the development of ropeway, cable car, funicular rail in India. Highlight of this program include one of the most challenging projects like ropeway projects in Hemkund Sahibji, that is Badrinath, Kedarnath and Gangotri, Yamunotri, which are the very important religious places in India, with a length of 13 kilometers, carrying 2,200 passengers per direction per hour. At the same time, the ropeway project at Kedarnath, situated at a height of 3,600 meters, with a length of 10 kilometers, carrying 3,600 passengers per direction per hour, making it potentially one of the longest ropeway in the world. And probably that ropeway company is present here when we have given the order to them. This project will also improve accessibility to religious sites, along with ropeway-led tourism development in hilly areas such as Jammu and Kashmir. Kashmir is supposed to be one of the best tourist spots of the world tourist, where we are making tunnels. We are making 32 tunnels in the Kashmir, and one of the tunnel named as Jhojila, which is supposed to be the highest, longest tunnel of 12 kilometers, which we are making near to Kargil mountain in Kashmir. This project will also improve accessibility to religious sites along with ropeway-led tourism development in hilly areas such as Jammu and Kashmir and northeastern states. The program also includes connecting sites of the world's most dynamic and historical center in Varanasi, with a flagship projects on decongesting urban areas in Varanasi with a ropeway of length of 4 kilometers. It can carry 3,000 passengers per direction per day to the city center, reducing travel time from 60 minutes to just 15 minutes. Cost of the project is around $110 million. We have set up a special purpose vehicle named as National Highway Logistic Management Limited for the implementation of this project. It is with my ministry, and these projects are planned to be implemented under public-private partnership (PPP) with innovative financing model such as hybrid annuity mode (HAM) or build, operate, transfer on BOT mode. The total outlay of the program is $15 billion. In Indian rupees, it comes 1.25 lakh crores, providing an attractive opportunity to ropeway players globally. In last 1 year, along with establishing projects worth rupees $450 million, rupees 4,000 crores are tendered, and work has been initiated on project worth $2.7 billion, that is rupees 23,000 crores. This project will enable to all-round development of hilly regions, tourist and religious places, and decongest urban centers. It will also promote new industries in these areas and create employment opportunities. The capital investment in the tourism sector, it is to be expenditure of 49% of the capital cost is for employment potential. India is a big country having a huge population, so the employment creation is equally a most important agenda for the government. If we can work together and bring down the cost of ropeway without compromise on the safety and quality, I am very confident that ropeway will be a game changer in the transportation sector. Only the one negative point in our country is our paying cost is very less. And that is the point most important which I want to request you, that with your technology, if you can make your vendors in India and manufacture the thing, it will reduce the cost drastically. And you will get more contracts in more numbers, which is going to be win-win situation for both. So this is to be one of the important things which I will request you that you should think on this line. We plan on providing incentives to OEMs, developers and other stakeholders as a part of the program to make ropeway manufacturing and assembly in a win-win proposition for all. To support the ropeway industry, we plan to create demand through rollout 250 plus projects. This is just initially we received 250 projects. If you can go ahead, we can receive 3 times, 4 times more projects than this. Enhance standards of ropeway development in line with global standards. Develop certification and training of key personnel to play a catalyst role and develop the supply chain for ropeway industry and provide support for setting up manufacturing centers in India. We encourage you to be a part of this transformational journey. I invite you all to the Indian Ropeway Expo. That is very important.
on aerial mobility, which is going to be held on 13th and 31st May 2023 at Delhi. I will request you all stakeholders, please, you are welcome for this event. The last my point, which again I will request you, regarding the urban development, the big population is a big problem. India has got the expertise that how to increase the population and how to increase the automobile number. That is to be an asset or the liability, but that is a problem with us. So my request to all of you that mass rapid transport on electricity, particularly in the city area, it can be really a good, useful solution for all of us. I am really happy that I got appointed to interact with you. Once again, I will request all of you, please come to India for our convention in the 13th, 31st May and participate and invest in India. Our government has already given the highest priority for this project, and your technical collaboration, cooperation and guidance is very important. Once again, I am giving my all best wishes to this convention. Thank you very much. चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब नितिन गडकरी जो है ना, इस मामले में पहले भी कई दफा बोल चुका हूँ कि भाई साहब बंदे हैं कमाल के। अक्षय बदल के रख दिया इंडिया का। भाई साहब 1200 किलोमीटर वहाँ पर अगर इतना ज्यादा एरिया वहाँ पर ये सिस्टम लगेगा तो मतलब जो मुख्तलिफ टूरिस्ट प्लेस हैं, खास तौर के जो पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर हो गया, वाराणसी हो गया, इस तरह के वाराणसी में तो नहीं खैर, और भी बहुत सारे जो है इलाके जहाँ पर बर्फबारी है। इंडिया इतना बड़ा है, कौन तो थोड़ी जगह पर पहाड़ होंगे। जो खास करके टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर ये फिक्स किया जाएगा। बर्फबारी में हाँ, केदारनाथ के बोल रहे थे, वो जो एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे लोग जो है यात्रा के लिए जाते हैं। तो केदारनाथ के बद्रीनाथ या केदारनाथ ही था मेरे ख्याल, तो वहाँ पर भी लोग जो जाते हैं वो अपने वो हर साल जो है ना वो ज्यादा लोग जाते हैं। तारक साहब सोच, नितिन गडकरी जी की सोच भाई साहब देश वो देश भी रोड बनाने में कह रहे थे, रोड मतलब वो चाहते नहीं कि इंडिया दुनिया में ट्रांसपोर्ट के मामले में ना पीछे रहे, कोई एक स्टेप भी पीछे ना रहे, दुनिया के साथ ऐसे बराबर चले, और कोशिश करते हैं कि आगे निकलो। अब 12-13 किलोमीटर लंबा जो टनल बनाया वो दुनिया का सबसे, मैं कहता हूँ बड़ा ही है, बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो 12-13 किलोमीटर टनल बनाना थोड़ी बात नहीं भाई साहब, सीधा रोड बनाना नानी ज्यादा आ जाती है। वो टनल बनाना भाई साहब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, यार अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। और दिख रहा है भाई साहब प्रोजेक्ट, अगर ऐसे प्रोजेक्ट ना लाएंगे तो भाई दुनिया तो इनकी आपस में भिड़ के ही मर जाएगी। जितनी पॉपुलेशन है, जितना रश होता है डेली बेसिस पर भाई साहब, भला भाई ऐसे लीडर हैं जिनसे इंडिया चल रहा है कि दूसरे कंट्री में जाके ना जो भी उनकी चीज अच्छी वो फौरन ले आते हैं फौरन ले आते हैं। ये पहले इनकी एक वीडियो देखी थी, उसमें ये बोल रहे थे कि भाई जो इंडिया में पहले जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है ना, जो ब्रिज बनाई जाती है, मेट्रो ब्रिज हो गई है, जो भी है इस तरह की चीजें, उसमें जो फासला, दरमियानी फासला होता है ना, वो जो पिलर का होता है वो कम होता है। ये दूसरे किसी कंट्री में गए थे, वहां पर देखा था कि वहां पे डबल फासला था, मतलब ज्यादा फासला था उधर। वो जो पिलर का ढेर सारा खर्चा होता है तो वो खर्चा बच जाएगा। इस तरह की टेक्निक, और ये एक तो बोल रहे थे कि भाई हम इतना ज्यादा मिकदार में लेते हैं सीमेंट, तो सीमेंट वाली फैक्ट्रियों से बात करके उनसे सस्ता सीमेंट लेंगे। तो ये ऐसे बंदे हैं कि जो गवर्नमेंट का, सरकार का खर्चा जो है वो कम करने की बात करते हैं, और लोगों की भलाई भी होती है, और हमारे लोग जो है वो खर्चा बढ़ा देते हैं। भाई साहब अब अपनों को कहाँ कंपेयर कर रहे हो उनसे। भाई साहब हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट जिससे वो लोगों को रोजगार भी मिले, खुशहाली भी आए। हाँ, हमारे की तो नियत ही पहले दिन से ये होती है कि हमने घोटाला कहाँ भाई साहब यकीन माने हमें आज तक पता ही नहीं लगा कि भाई हमारा कोई रोड मिनिस्टर भी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक रोड मिनिस्टर है कि जो जिसके और फिर इतना जुनूनी
हाँ इतना जुनूनी, उन्हें सुकून ही नहीं आता जब तक वो काम ना कर ले भाई। जो भी नया प्रोजेक्ट होता है वो लॉन्च ना करे, उन्हें उस वक्त तक भाई खाना ही और जिस नहीं स्पीड होता। से ये रोड बनाए जा रहे हैं, इतने ज्यादा रोड बन रहे, मैं कहता हूँ ये तो बहुत जल्दी दुनिया के सबसे लंबे नक्शे ही बदल जाएगा भाई साहब, नक्शे ही बदल जाएगा इंडिया का। और तेजी भाई इतनी तेजी आ जाएगी। बोल रहे थे कि जो गए वो एक जगह को बोल रहे थे ना, वो मेरे ख्याल में जो लंबा बनाया है, एक लंबा रोड जो बनाया एक्सप्रेस इस तरह करके था कुछ। हाँ हाँ मुझे शुरू में हाँ दिल्ली मुंबई सॉरी दिल्ली हाँ दिल्ली मुंबई डबल है। हाँ तो वो मेरे ख्याल में कह रहे थे कि भाई पहले जो है वो सफर जो 8-9 घंटे लगते थे, अब जो है वो 3-4 घंटे में पहुंचते। तो भाई इतना फर्क जब पड़ेगा, जो दिनों का टाइम था वो रोड घंटों मैप में तो जाएगा। तारक और भाई घंटों इंडिया का के अंदर घंटों में कमाल आ का जाएगा। बना दिया गया है। मैं कहता हूँ इतने ज्यादा रोड मैंने हो सकता है पूरे अमेरिका के अंदर भी ना हो, इतने ज्यादा किलोमीटर के हिसाब से रोड मैप बहुत है। बहुत बढ़िया भाई। और भाई साहब हैं भी कमाल के, कमाल कर दिया कोई उसके शक अंदर। नहीं, कोई शक नहीं। भाई जब वो फ्लाई ओवर अंडर कुछ पहाड़ी इलाके जब देखते हैं ना कि भाई वहां पर भी इतने कमाल के रोड बने हुए हैं। पहले जो हुकूमत थी, यकीन माने वो सोचती थी कि भाई बॉर्डर के साथ नहीं रोड बनाने, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना, अगर कब्जा हो जाएगा तो वो शहर में घुस जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो चेंज हो गया है। सही बात है। अभी तो कहते हैं वैसा बॉर्डर के साथ उसके आओ, घुस के मारेंगे। सही हाँ हाँ तो ये तो हो गया। तो क्या बड़ा अपने जवानों को खुराक मुहैया करनी होगी, असला मुहैया करना होगा, वो भी तो ऐसे फौरन ही होगा ना जरा। सही। तो ये जो केबल मैप जो है ये क्या रोप वे जो केबल कार भी, इसे पाकिस्तान में तो केबल कार भी बोलते हैं, तो इंडिया में पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं इसको। तो ये भाई मेरे ख्याल में मरी में भी है, मरी में हाँ वहाँ पर भी है, जहाँ पर जो है ना यहाँ पर जाना थोड़ा लिफ्ट मुश्किल हो जाता है ना, हाँ, लिफ्ट सिस्टम। वो तो यहाँ पर भी है। लेकिन जो ये बनाया है ना, ये जो दिखा रहे थे वीडियो में, हाँ सब ये तो बड़ी कमाल के लग रहे थे। एक मैंने कहीं पर देखा था, इंडिया की एक वीडियो में देखा था कुछ, तो भाई एक तो होता है ना वो शीशे बंद होता है, जिस तरह बिल्कुल बंद होती है वो, एक तो ये थे, और एक जो है ना वो बिल्कुल वो मतलब खुला खुला माहौल होता है। वो तो जैसे चेयर होती है और उसके ऊपर बैठ के जाना। वो दो की भी होती है, हाँ 2-3 की होती है वो 8 और 10 और वो इतनी सर्दी में जब जाते हैं भाई साहब, उनकी हालत देखने लायक होती है। वो तो नए लोग जाकर उधर बैठते हैं, जब उतरते हैं तो तभी उनको चोट लग जाती है, बैठने के लिए मतलब मुश्किल पैदा होती है। तो वो चलती चलती के ऊपर ही आपने उठना बैठना। भाई सोच रहा हूँ कि भाई 1200 किलोमीटर का ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत लंबा चौड़ा है। अगर ये बन जाए तो टूरिस्ट भाई साहब आएंगे, और जो है वो इंडिया जो है जहाँ पर भी ये लगेंगे हिसाब से टूरिस्ट आएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। रेट छोड़ा जाएगा, हजारों फायदे लिए जाएंगे। हाँ टूरिस्ट स्पॉट बनेगी बहुत ज्यादा। तो जो यात्री जाते हैं केदारनाथ, वो भी उनके लिए भी फायदा है कि वो भाई काफी जो है वो मुश्किल रास्ता होता है, और इसमें बैठ के स्लाइडिंग देखने के तो वो कितने आ रहे थे। वही तो भाई ये जल्दी पहुंच जाएंगे, और एक बिल्कुल आसान, और ऊपर से नज़ारे भी कुदरत के नज़ारे भी लेंगे, तो बड़े ही भाई जबरदस्त। भाई साहब जहाँ पर उनका बस नहीं ना बनता भी, इधर से मुश्किल है रोड बनाओ, उधर भाई साहब वो रोड मैप बना रहे हैं। हाँ सही बात है यार, तो बहुत अच्छा लगा देख के प्रोजेक्ट भाई। ऐसे बिल्कुल सलाम भाई, ऐसे हुक्मरान अच्छे मिले भाई साहब इंडिया को। नितिन गडकरी तो भाई मेरे पहले भी बोल चुका, मेरे फेवरेट है। काश ऐसे मिनिस्टर हमारे पास भी होते तो आज पाकिस्तान की हालत अच्छी हो जाती। लेकिन मैं फिर भी हैरान इस बात से हो जाता हूँ कि वो जो हमारे पास नहीं, हमारे बाजू में ये भाई साहब कुछ ना कुछ तो फायदा ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है ना, हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ ना कुछ खुशहाली के दौर आ जाए, जिनके लिए ना कुछ आसानियां पैदा हो जाए। भाई मैं सोच रहा हूँ ये भी बोल सके हमारे कंट्री के अंदर भी भाई साहब ये हो रहा है, हम तो भाई साहब लोगों के कंट्री की भाई साहब तारीफ कर सकते हैं, वही दिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये अपने लोगों की मतलब कोई गुर्बत फुलास जो भी है इंतजार से वो गुजर रहे बेचारे, क्या करें। चलो जी बस ये हालत अभी ऐसी रहेगी। और भाई मैं सोच रहा था कि भाई हमारे रोड भी इतने बुरे नहीं, मौसम बहुत अच्छे रोड है इंडिया से, हमारे तेज रोड लेकिन घोटाले तो होते हैं नए रोड बन रहे उस हिसाब से इतनी तेजी तो नहीं है ना। हाँ ये इंडिया के साथ वो देखो वो पहले वाले जो रोड बनाते थे एक मरतबा वो यार ये जदीद तरीन सी पैक वाला बनने वाला था, वो भी देखो उसमें कितनी खराबियां हुई। नहीं वो रोड मैंने सफर किया यार लेकिन मुकम्मल तो लेकिन उसमें खराबी उसमें
डीजल नहीं हुआ, लेकिन रोड पे कमाल का उसमें भी- सफर करके देखा, यकीन माने बंदे को नींद आ जाती है। उसमें भी वो बड़े पप्पा वाले आ गए ना। पप्पा जाओ। तो ठीक है भाई, अच्छा लगा देख के। और नितिन गडकरी भाई साहब बहुत ही लेजेंड है, ऐसे जो है मिनिस्टर अगर मिले तो भाई साहब देश तरक्की करेगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।